Now coming to the ethical dilemmas in private institutions. Private institution में क्या ethical dilemma रहता है? Private institution basically a set of people joined together for carrying out a specific activity. The striking feature of private institution is that it is devoid of government. यहाँ पे government नहीं है, because it's a private institution. Private institution is also a part of the society. They have a deep sense of responsibility towards all stakeholders. Stakeholders like stock जो hold करते हैं, supplier, consumer, customers, employees, society, government, and so on. Government is also a stakeholder, right? अगर PPP public private partnership कोई एक रोड बन रहा है PPP मॉडल पे, तो गवर्नमेंट becomes a stakeholder. Obviously the private institution has to have, for legality they have to register under a government act, right? They have to register under the government, so in a way they are controlled by the government. I'll not say fully controlled, but to some extent from a law point of view it is done, right? So these are the stakeholders. This sense of responsibility makes even private institutions observe ethical principles. तो आप ये नहीं बोल सकते कि ethical principles are only for public institutions, because in a way the private institution has also stakeholders like we people. The people are also the stakeholders. Consumers, suppliers are people only, right? So this gives rise to ethical dilemmas. First is profit versus social responsibility. ये हमेशा आप जब प्राइवेट की बात आती है, we always use the word profit. We always use the word capitalistic, right? Profit making. हमेशा हम ये word पब्लिक में यूज नहीं करते हैं. वी डोंट यूज द वर्ड पब्लिक because government is always for welfare. Okay, so first dilemma which you get is profit versus social responsibility. Most private institutions focus on profit. See, you don't write word all. Most, they intend to realize profit. कैसे? By raising price, by reducing cost. हमेशा उनका मतलब रहता है प्रॉफिट पे. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का काम वही है. They always go for profit. If you go any kind of private institution, it can be educational institutions, it can be UPC institutions, it can be anything. Private word है तो obviously उनका पहला मोटर रहता है profit. Okay. So these are the dilemmas. पहला है social versus profit responsibility. एक होता है, देखो फर्क आपको वर्ड में पता चल जाएगा. प्रॉफिट वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए होल. प्रॉफिट वर्सेस एम्प्लॉय का वेलफेयर, जो काम करता है वहां पे उसका वेलफेयर के लिए उतना काम नहीं करते हैं जितना वो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं. ऑटोमेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट. अगर आप ऑटोमेटेड कर दोगे, आज के डेट में सब कुछ डिजिटल है, ठीक है, सब कुछ नेट से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लास्ट कुछ 10 साल से 10-12 साल से एवरीथिंग मोस्टली वी आर मूविंग इनटू एन ऑटोमेशन इंडस्ट्री. तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इट विल हैम्पर द एम्प्लॉयमेंट, हैम्पर द मैन पावर. प्रोमोटर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स, इनके बीच में भी हमेशा डायलेमा रहता है. तो एक एक करके हम पढ़ेंगे. सो व्हेन द क्वेश्चन कम्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का एथिकल डायलेमास लिखो. आप 4 पॉइंट लिखोगे, एक एक एग्जांपल दे दोगे, दैट्स इट. 150 वर्ड्स, ठीक है. Okay, so private cannot resort to option 1. What is option 1? Option 1 is this one, by raising the price. Private they cannot resort to option 1 because that could drive customers to competitive products. आप रेज अगर प्राइस बढ़ा दोगे तो आपके पास कोई जाएगा नहीं, आपसे चीजें खरीदेगा नहीं, because market dynamics does not permit that. ठीक है, hence they are left with option B, प्राइस को कम करेंगे. It is here that ethical dilemma starts. कॉस्ट मेनली कंप्राइजेस रॉ मटेरियल्स, लेबर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. जो आपका खर्चा रहता है, रॉ मटेरियल होता है, लेबर को पेमेंट देना पड़ता है, बहुत सारे अलग एक्सपेंडिचर खर्चे रहते हैं. ओके, रॉ मटेरियल्स इंक्लूड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑल्सो. तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करता है. तो यहाँ पे एक डायलेमा आपको आता है, इट इज अगेंस्ट एनवायरमेंटल एथिक्स. जब हम और एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ये सब आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स. सो यू हैव टू राइट हियर आल्सो, इट इज अगेंस्ट एनवायरमेंटल एथिक्स. आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, देयर इज नो रेगुलेशन टू एक्सप्लॉइट.
मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, रेगुलेशन है नहीं बिकॉज वी डू नॉट हैव ग्रीन जीडीपी। हम एनवायरमेंट में वी स्टडी, वी डू नॉट हैव ग्रीन अकाउंटिंग इन आवर जीडीपी कैलकुलेशन, दिस इज नॉट included. But these natural resources are common property resources. Thus, these institutions seek to appropriate most of the CPR, leaving less to the rest who have equal right over the same. तो यहाँ पे आप लिखो कि जो हम नेचुरल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट एथिक्स बिकॉज दिस इज द अप्लाइड एथिक्स। हम जब अप्लाइड एथिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें एक कंपोनेंट आएगा एनवायरमेंट एथिक्स का। सपोज there is a textile manufacturing unit, it needs a lot of water, it starts drawing water from a nearby water body belonging to the community। ठीक है, एक यूनिट है वहां पे, उसको उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को यूनिट को पानी की बहुत जरूरत है, तो वो साइड में एक कम्युनिटी का एक वाटर बॉडी है, वहां से वो पानी लेना चालू करता है। तो कम्युनिटी इज लेफ्ट विथ लेस वाटर, राइट? कम्युनिटी के पास और पानी नहीं है, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ ड्राउट। जब ड्राउट हो जाएगा तो पानी नहीं रहेगा। Here precisely the dilemma is whether to draw water from the water body or to bring water from a far away places where the water is aplenty। तो देखो, एक कंपनी के लिए एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से सोचो, बिकॉज प्राइवेट कंपनी ऑलवेज प्रॉफिट। तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली व्हाट दे विल डू इज दे विल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडी विच बिकॉज इट इज नियर, इट इज वेरी चीपर, या इट्स अ चीपर ऑल्टरनेटिव। लेकिन दूर से अगर पानी लगेगा तो इट इज एन एक्सपेंसिव। तो हियर इफ यू आर एथिकल, you are an ethical person, so you will feel a dilemma because the company is also yours। ठीक है, you have to see the profit। Now you are also in this dilemma। The former alternative seeks to achieve the profit objective, while the latter alternative likes to seek the social objective। These two objectives are mutually exclusive। The second aspect is that of incurring costs that are important for a society but not for business। सोसाइटी के लिए अच्छा, आप दूर जा रहे हो, पानी वहां से ला रहे हो, लेकिन आपके बिजनेस के लिए तो आपका खर्चा बढ़ रहा है, योर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। So expenditure incurred on curing effluents, purifying exhaust, adoption of green energy techniques, and so on are expenditure that add value to the society। आप अगर इस चीज पे, आप अगर ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है, यूज कर रहे हो, it means it is adding value to the society, but they will increase the costs and pull down the profits। Precisely, the dilemma is whether the private institution has to incur this cost to reduce harm to the society, or should the private institution forego this cost and realize its business objective of profit। तो क्या होना चाहिए कि एक जगह प्रॉफिट दिख रहा है, एक जगह सोशल कॉज दिख रहा है। सो इट इज बिटवीन द डायलेमा बिटवीन सोशल कॉज पे करेंगे या प्रॉफिट पे करेंगे। The second plank is in this dilemma between profit and social responsibility is the operation of sin industry, like tobacco industry, alcohol industry, porn industry, and so on। The existence of private institutions engaged in this process is itself an ethical dilemma। They are ethical because of the following reasons, and why they are not ethical because of the following reasons। These industries are ethical because they provide jobs। टोबैको इंडस्ट्री देख लो, बहुत जॉब्स प्रोवाइड करता है, एंड हेंस हेल्प मेंबर्स ऑफ सोसाइटी find livelihood for themselves and their families। They also pay taxes, sometimes more than normal taxes also they pay। and they also, जो taxes अगर पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बढ़ रहा है, so it helps government fund सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, दे कैन फंड फॉर द अल्टीमेटली फॉर द सोसाइटी। ओके, और क्या है? दे फ्लैश वार्निंग्स, they flash warnings about the ill effects of using their products, and they're also not forcing anyone to consume their products। People consume it on their own volition। तो ये भी एक like positive point है कि they are not forcing anyone to use tobacco, right? It is the people who are doing so। In this sense it is ethical, but why it is unethical also? Because they affect the health, quality of life कम करते हैं। Their contribution to society in terms of employment is nullified by the quantity of lives they adversely affect। One side you are giving the employment, but the other side the health is also reducing, right? Their contribution to the GDP is nullified by the out of pocket health expenditure। अगर health खराब होगा तो आपका out of pocket health expenditure बढ़ जाता है। So what is the need then?
So this is the thing, how you write an answer, how you balance it. एक जगह अगर हो रहा है चीजें अच्छी हो रही है तो एक जगह वो कम मतलब negatively it's also adversely or negatively affecting. Okay, this dilemma can be resolved in the following ways. Continuously researching on and adoption of mechanism that reduce the cost and at the same time serve the social responsibility. हमको ऐसे framework या फिर ऐसे research and development करना चाहिए एक private, it's for the private institutions to find a solution or a framework where your cost is also reducing plus also you are doing the social responsibility. The best example is corporate social responsibility. Those getting profit pay 2% to here as per the Companies Act of 2013 economy topic. Okay, companies not getting greedy about unreasonable profit. See, unreasonable profit के लिए greedy होने की जरूरत नहीं. Obviously, if you are working good, obviously profits will come. Profits will always come if you strive for excellence in any field. It can be in any field. But the profits should be reasonable. You should not go for unreasonable profits. The company should be satisfied with the reasonable profits and be ready to forego any additional profit in favor of social responsibility. CSR में अगर तो हम देना चाहते हो corporate social responsibility में. Sin industries should switch to better society friendly and ethical products and close down their business. Sin industries, tobacco हो गया, they should go for more society friendly. Okay. So these are the examples of this dilemma: profit versus a social. Now comes profit versus employee welfare. यहाँ पे प्रॉफिट की बात भी तो हो रही है प्लस एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में हो रही है. सिर्फ एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में अभी हमने पढ़ा एज एट लार्ज सोसाइटी की क्या है, सोसाइटी का वेलफेयर. ओके फाइन. सो ethical dilemma, profit versus employee welfare. This dilemma is in continuation with the previous dilemma. कहीं ना कहीं वही से कंटिन्यू हो रहा है. लेबर वेजेस, एम्प्लॉय वेलफेयर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कॉस्ट. ठीक है, एम्प्लॉय का वेलफेयर हो गया, लेबर वेजेस हो गया, ये भी एक प्राइवेट कंपनी का कॉस्ट में ही जाता है. द डायलेमा इज प्रिसाइजली दैट since employees are working for the organization and they are in fact responsible for the profits made by the private institution, they deserve to be paid handsomely. क्योंकि एम्प्लॉइज बोल रहे हैं कि वी आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली एंड हमारे काम के वजह से प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ वी आर वर्किंग, दैट्स व्हाई योर institution or is getting profits, so we deserve to be paid handsomely, sometimes even a share in the profit. They also deserve to be provided with other welfare benefits. Provision of welfare benefits to employees also involves cost. अगर हेल्थ या फिर हेल्थ वेलफेयर में बहुत कुछ आ जाता है तो कॉस्ट इन्वॉल्व करता है. Now this is where dilemma arises. Should the private institution invest in employee welfare or should the institution exercise restraint? नहीं करेगा. Restraint मतलब restraining yourself, moving back in promoting welfare so that the profit is increased and interest of stakeholder is promoted. ठीक है. Investment in employee welfare is ethical. First of all, ये ethical क्यों है? Because it indirectly increases profits. Because a happy and healthy employee is an asset to the institution. He shall bring fresh ideas and work hard to improve the performance of the organization. ठीक है. Thus, it is promoting the interest of shareholders also. Wealth generated by the collective effort of many should not be appropriated by a handful few. This amounts to injustice against those employees. Hence, investing in employee welfare would do good this injustice. So these are the reasons why एक एम्प्लॉय के इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय के हेल्थ का भी केयर करना जरूरी है. हेल्थ हो या कोई भी हो, मोस्टली इट इज हेल्थ एंड अदर बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को मिलता है. इफ ही इज वर्किंग हार्ड सो ही शुड बी गिवन दैट बेनिफिट. बट सेकेंड पार्ट ये है कि इट इज ऑल्सो
नॉट इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो एथिकल। क्यों सर, मतलब गवर्नमेंट को, सॉरी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिकॉज एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी बिंग पेड सैलरीज फॉर देयर, दे आर ऑलरेडी बिंग पेड। ठीक है। इट मिल इट मिलिशेट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो, यूजुअली कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि प्रॉफिट्स और बेनिफिट शुड गो टू शेयर होल्डर्स, बिकॉज उन्होंने पैसा लगाया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। एम्प्लॉय तो इन्वेस्ट नहीं किया है ना, तो व्हाई टू गिव देम दैट? दैट इज वन रीजन। एम्प्लॉयज हैव नॉट इन्वेस्टेड इन मनी, सेम पॉइंट है, into the business, hence they should be paid to their work but not as if they invested money as well। उनको अपने काम के लिए पैसा दिया जाता है, ना ही उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, because they have not invested, like technically they have not invested, if you see in that way, like the shareholders। now this dilemma can be also resolved कैसे? provision of welfare benefits by means of partial contribution by employees themselves, for example health insurance। जब प्रीमियम दोनों शेयर करेंगे, एम्प्लॉय भी शेयर करेगा, एम्प्लॉयर भी शेयर करेगा, बस प्रीमियम आप शेयर करो, आप उस हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। इफ देयर एनी प्रॉब्लम, व्हेन द प्रॉब्लम हैपेंस, यू कैन गेट द इंश्योरेंस। तो पार्शियल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। प्रोविजन ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉयज, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, स्वेट इक्विटी हम बोलते हैं उसको। वी कॉल द वर्ड, द टर्म नेम इज sweat equity। I don't know whether you know or not, but it's a part of eco। prelims में क्वेश्चन ऐसा आता है, the term sweat equity is related to what? ये किसको मिलता है? ये एम्प्लॉइज को मिलता है अपने काम के लिए, बट किस फॉर्मेट में मिलता है? शेयर्स मिलता है। ओके। तो प्रोविजन ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉइज इन द फॉर्म ऑफ sweat equity। ओके। accordingly employees become owners of the private institution। owner, if you are share, you are like holding some shares, so you become some percentage owner, right? Then they would get a portion of the profit also. This should help them take care of their own welfare. So this is, so sweat equity is a good term. The company should follow this. Reserving a portion of profit in 1 year for employee welfare and then investing that profit in various avenues. Returns on this portion of investment should be exclusively used for employee welfare। ठीक है। Dilemma between automation versus employment, this you can write in your own language also, because automation, employment, automation में machines आ जाती है। So ethical principles in conflict here are efficiency versus responsibility towards employees। एक तो है आपका responsibility to employees, दूसरा चीज है कि machines अगर आ गए तो employees की क्या जरूरत है, right? So automation implies using machines to do the work previously done by humans। machines can create more output in less time and at less cost। however it cost jobs लेकिन चला जाएगा, जो लोगों का जो jobs है, employment है, उसमें कमी आएगी। it may lead to attrition also। ये भी हो सकता है, आपको लाइक निकाला जा सकता है, जॉब लॉस जो काफी सारे कंपनीज करते हैं, कुछ कुछ जैसे पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया। ओके। सिमिलरली, if in order to protect jobs a private institution prefers not to go for automation, then it shall soon get outdated। अगर ऑटोमेशन नहीं करोगे तभी आप आउटडेटेड हो जाओगे, तो मार्केट में भी प्रॉब्लम होगी। यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव एंड इवन क्लोज डाउन। This dilemma can be resolved in the following ways: continuously reskilling the employees so that their skills do not become outdated and they would find alternative employment even if their present skills are replaced by automation। तो हमेशा you have to keep like in synchronization with the skilling। आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। A portion of the money saved because of automation should initially be used for rehabilitation of employees। अगर भी आप ऑटोमेशन जाते हो, कुछ पैसा आप एम्प्लॉइज के लिए रख लो, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ हैंडसम एग्जिट बोनस दे दो, लोन्स फॉर देम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फॉर अ वेंचर, ऐसे भी आप कर सकते हो। सो दिस ऑल थिंग्स यू कैन ऑल, दिस पॉइंट्स यू कैन टेक लाइक रेडीमेड फॉर केस स्टडी। केस स्टडी में ये सब पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा इन सजेशंस, यू हैव टू राइट। Next is dilemma, last one is dilemma between promoters and shareholders। Okay. So to understand this dilemma, one has to have some prior knowledge about the functioning of a joint stock company। Okay, थोड़ा इकोनॉमी का है, ज्यादा नहीं है।
whenever a business concern is in need of more capital for expansion, they raise money. पब्लिक से मनी रेज करते हैं भाई, बॉन्ड्स एक है, सेल कर देते हैं कुछ शेयर, ठीक है, दे रेज मनी. द पोर्शन ऑफ ओनरशिप बॉट बाय अ पर्सन इज कॉल्ड ए शेयर. अगर मैं कुछ शेयर खरीदता हूँ, वो सेल करता है, मैं खरीदता हूँ, तो मेरा शेयर आएगा, इट बिकम्स दिस मच परसेंटेज ओनर, दैट पर्सन इज कॉल्ड शेयर होल्डर. All shareholders are collectively the owners of the business concern. Those who actually found the company are called promoters. Those who actually found the company, they are called promoters. They hold a significant number of shares also. Obviously, they will also hold. Thus, they own the largest pie of ownership, while the remaining pie is shared by a lot of people. अगर वो 55 या 60% होल्ड करते हैं, बाकी के 40% बहुत सारे लोग करते हैं, बिकॉज दे आर द शेयर होल्डर्स. उन्होंने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में. दिस आर डन बाय द ओनर्स, तो उनको हम प्रमोटर बोलते हैं. मोस्टली सच पीपल आर कॉल्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड सिंस देयर ओनरशिप इज मिनिस्कुल. ये जो होते हैं, ये इसको माइनॉरिटी बोलते हैं बिकॉज ये कम, इनसे कम करते हैं. ओके, तो प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में होता है. ऑन फेस इट अपीयर्स दैट since promoters are also shareholders, their interest align with ordinary shareholders, but in reality it is not so. लगता है कि प्रमोटर भी तो शेयर होल्डर है, नॉर्मल शेयर होल्डर को भी शेयर होल्डर बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं सबके सब शेयर होल्डर्स ही हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम होता है. Since promoters know the functioning of the business concern, they have access to some confidential price sensitive information. उनके पास कुछ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, बिकॉज दे आर द ओनर्स एंड दे फंक्शन इट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट. They may try to influence the company decisions that may be detrimental to the interest of ordinary shareholders through the usage of price sensitive information to buy or sell the share, जिसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं. इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर का जो इंफॉर्मेशन होता है कि आगे ये होगा, उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता है स्टॉक्स में और शेयर प्राइसेस में. सो दे नो इट, सो दे कैन इन्फ्लुएंस दैट. सो इफ दे नो इट, इफ दे इन्फ्लुएंस इट, तो ऑब्वियसली इसमें नुकसान किसको होगा? इसमें नुकसान शेयर होल्डर्स को होगा ना, उनका प्रॉफिट में नुकसान हो गया. फिर टू इलस्ट्रेट, सपोज ए कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग एन एक्विजिशन. अगर एक कंपनी को एक्विजिशन करना है, किसी और कंपनी को मर्ज करना है, दे नोट दैट प्राइसेस ऑफ शेयर्स गो अप, दे बाय द शेयर्स थ्रू प्रॉक्सीज एट लोअर प्राइसेस. Once the acquisition really happens and the share price go up, they sell those shares or make huge profit. अगर कंपनी इज प्लानिंग, कंटेम्पलेटिंग प्लानिंग कि हम एक्विजिशन करेंगे, ठीक है, उनको पता है एक्विजिशन करने के बाद उस कंपनी का शेयर बहुत ही हाई हो जाता है, ठीक है, उनको पता है, तो वो पहले क्या करते हैं, लोअर प्राइस में खरीद लेते हैं. उनको पता है आगे वो प्राइस बढ़ेगा, तो जब एक्विजिशन हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, दे मेक ए ह्यूज, सेल कर देते हैं, फिर ह्यूज प्रॉफिट हो जाता है. दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. बिकॉज यहाँ पे एक अनड्यू एडवांटेज रहता है हमेशा प्रोमोटर्स को, बिकॉज दे नो द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव चीजें उनको पता रहता है. ओके, सेकंड, those who sold shares those who sold shares to promoters proxies have incurred notional loss. उनको तो लॉस हो गया ना जिन्हें शेयर इनको बेचा था. There is asymmetry of information between promoters and stakeholders, which is very important. Information asymmetry है, सेम पेज पे इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, खास करके जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहता है. द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आर नॉट एट द सेम पेज फॉर बोथ. Similarly, suppose the company has started incurring losses, ordinary shareholders get to know about it only when the quarterly profits are announced. अगर एक कंपनी का लॉस हो रहा है, तो शेयर, जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स बाहर के रहते हैं, जो खरीदते हैं, उनको पता चल गया कि क्योंकि उनको पता चल गया, बिकॉज द प्रॉफिट्स आर अनाउंस्ड. जब प्रॉफिट्स अनाउंस हो जाते हैं, उनको पता चल जाती है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है. बट प्रमोटर्स आर लाइकली टू गेट टू नो अबाउट द सेम इन एडवांस. उनको पहले से पता चल जाता है. They may sell the shares to prevent erosion of their wealth. उनको पहले से पता होगा because they are the owners. This actually incurs loss to those shareholders who buy the share. लेकिन लॉस किसको होगा? शेयर होल्डर को होगा, जो कि वो बाई शेयर करेंगे. They'll buy those shares. Another area where promoters get an undue advantage is in the selection of management of the company. मैनेजमेंट कौन, ये सब सीईओ वगैरह सब रहते हैं,
बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहते हैं। देखो बोर्ड डिसीजन लेता है, ठीक है। So the board makes decision on the selection of these executives. Promoters tend to indirectly influence. क्योंकि they are the owners, they will influence. These operational executives tend to listen to promoters informally in making decisions. तो ये कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो कि न्यूज में भी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो, जो कि ऑब्वियसली इट इज अ रियलिटी नाउ आल्सो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो कि इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। When you read Companies Act from economic topic, you will come to know. Creation of an independent fund, and the salaries of the key operational executives are paid out of the same. The salaries and other perks would then get de-linked from the influence of promoters. Okay, so this is the ethical dilemmas. So we are done with the ethical dilemmas, and you can expect 2 to 3 questions. Case study एक दो आ सकता है, या फिर direct questions यहाँ पे भी आ सकता है, of public institutions and private. Very common question, but you have to write in 150 words. Okay.